Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua. Today we will do an important topic of MEG04 aspects of language. We will learn about major learner factors in language acquisition. Specifically, we are talking about second language acquisition. Whenever anyone tries to learn a second language other than the mother tongue, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करते हैं जो कि हमारे लिए सपोर्टिव नहीं होते। उन सभी फैक्टर्स को हम समझेंगे इन दिस वीडियो। Please do take a pen and paper and note down each and everything being told in this lecture. Our concentration will be on learning a second language, not the first language. First language, everyone learns automatically without making a special effort. But language acquisition, when we are talking about the second language. A person's second language or L2 भी बोला जाता है इसको. Second language or L2 is a language that is not the native language of the speaker, not the mother tongue, but learned later. A second language may be a neighboring language, another language of speaker's home country, or a foreign language, or some language being taught at your school level, at your academic level. So second language is something that needs to be considered whenever we are doing the factors of language acquisition. Any language can be the second language. Second language these days is considered very vital. You must be knowing, अच्छा माना जाता है कि किसी को कोई एक additional language आती है. Second language acquisition and sometimes called second language learning, otherwise refer to L2 acquisition as well. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है L2 acquisition, second language learning, second language acquisition, your answer should remain the same. It is nothing actually but the process by which people learn a second language, and second language or L2 acquisition is also the scientific discipline devoted to the studying of the process. प्रोसेस को भी स्टडी किया जाता है, ये भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है. बट अभी हम उस साइंटिफिक डिसिप्लिन की बात ना करके फैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन से फैक्टर सपोर्टिव होते हैं और क्या सपोर्टिव नहीं होता है. द फर्स्ट थिंग, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं एग्जाम्स में. द फर्स्ट पॉइंट हियर इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर इज एक्सपोजर टू द न्यू लैंग्वेज. नई लैंग्वेज के लिए आपका एक्सपोजर कितना है. थिंक अबाउट द फ्लुएंसी ऑफ मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच और जर्मन और चाइनीज. एक बच्चा इमेजिन करिए, आपके आसपास आपको कोई भी रियल चाइल्ड भी समझ में आ जाएगा इमेजिन करने के लिए कि किसी ने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है या जर्मन या चाइनीज या कोई भी सेकेंड लैंग्वेज सीखी है. क्या वो उस फ्रेंच जर्मन इटालियन लैंग्वेज को उतना प्रैक्टिस कर पाते हैं जितना कि इंग्लिश या हिंदी को कर पाते हैं. एंड प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस इज बेसिकली जिसकी वजह से हम लैंग्वेज भूलते हैं. लेकिन अगर ऐसी कोई लैंग्वेज सीखी है जिसका एक्सपोजर हमें मिलता है, इंग्लिश इज अ रियली गुड एग्जाम्पल. इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर है, पीपल जनरली टेंड टू स्पीक इन इंग्लिश एट मेनी formal occasions. There are so many movies, web series available in English on OTT platform. तो English language एक ऐसी language होती है कि जिसको सीखते हुए हमें exposure ज़्यादा मिल जाता है. Just for example, I am saying it may be different for different people. All the fingers can never be alike. लेकिन अगर कोई ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं जो घर पे भी बोली जाती है, सब लोग उसको घर पे बोलते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स उसको यूज करते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस उस लैंग्वेज में ज्यादा हो जाता है. बिकॉज लैंग्वेज इज समथिंग विच इज नॉट एट ऑल restricted to classroom. Ask yourself, does the learner experience the language in the classroom only? तो क्लासरूम में ही बोलने के लिए तो हमने सीखी नहीं है. जब सिर्फ क्लासरूम में बोलने के लिए ही सीखी नहीं है तो उसको सीखने के लिए भी क्लासरूम से बाहर की प्रैक्टिस की जरूरत है. Another factor is age of the learner. The age of the learner plays a really important, crucial role in the ability to develop mastery over new language. The earlier a child can begin learning a new language, the more quickly and completely they will develop mastery in speech, writing, reading, listening, everything. Achieving a native like mastery, जैसे वो उस कंट्री के एक नेटिव ही हो. अगर चाइनीज सीख रहे हैं तो एक छोटा बच्चा सीखेगा तो इतने अच्छे से सीखेगा कि थोड़े टाइम बाद उसकी फ्लुएंसी नेटिव्स की तरह हो जाएगी. But it is difficult
for adults than it is for children, because adults have already grabbed so many concepts of their own language by the time they start learning the new language. Suppose हम किसी चाइनीज या जर्मन लैंग्वेज को सीखना शुरू करें एट दी आफ्टर दी एज ऑफ 18 और 20, तो ऐसा लगेगा कि हम हमेशा कंपेयर कर रहे हैं उसको अपनी नोन लैंग्वेजेस के साथ, कि इंग्लिश की ग्रामर तो ऐसी होती है, हिंदी की ग्रामर तो ऐसी होती है, इसमें वर्ड्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डिफरेंट है। वी विल ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर। हमारे ब्रेन्स में ना वो नई लर्निंग के लिए स्पेस थोड़ा सा कम रह जाता है जैसे जैसे हम ग्रो होते चले जाते हैं। सो it is best to begin learning at young age and stick with it. Next factor that can affect is the learner's native language. The language that we want to learn and our native language. If these languages are similar, maybe in form of grammar or maybe in form of font at least, तो easy हो जाता है थोड़ा सा उस new language को सीखना। हमें अगर चाइनीज या जर्मन सीखनी है तो पहले अल्फाबेट्स भी सीखने पड़ेंगे उसके। और अगर संस्कृत सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत सीखते हैं हिंदी स्पीकिंग लोग, तो एटलीस्ट वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो एटलीस्ट उसके बेसिक अल्फाबेट्स को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे भी हैं जो संस्कृत और हिंदी के मिलते हैं। जस्ट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. So the learner's native language plays an important role in the acquisition of a new language. If the learner's native language is from a similar family of languages, the acquisition process will move along much more quickly. One more example, let us say it will be much easier to learn Spanish if the learner's native language is French. Many general language skills such as grammar, syntax are transferable from one language to the other, because we always tend to learn the language using the ट्रांसलेशन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स की। अगर हिंदी में ऐसा बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं तो फ्रेंच में क्या बोलते हैं। सब्जेक्ट का प्लेसमेंट, अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो किसी और लैंग्वेज में क्या होता है। अगर कोई और ऐसी लैंग्वेज सीखेंगे जिसकी ग्रामर इंग्लिश से बहुत मिलती है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स मिलते हैं, अल्फाबेट्स मैच करते हैं, तो आई थिंक उस लैंग्वेज को थोड़ा सा जल्दी सीखा जा सकता है। And one very important thing, that is learners motivation. अंदर से कैसी फीलिंग आती है, सीखनी है कि नहीं है। Okay, just like any educational activity, the motivation of the learner is very important factor for their success. Learning a new language can be great fun and it can be an important necessity if we are learning it by heart. So, making the most of motivation is a good way to improve language learning for children. If the learner lives in their native country but they are taking classes in a new language, they will have more success if they are taught by a favorite teacher who makes the learning environment fun and engaging. Creating a positive and enjoyable environment for learning is an important factor for success actually. अगर आपको सीखने में मजा आता है, दिल से आवाज आती है आपको सीखना है, तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे सीखते हुए और ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। या फिर आपका कोई पर्पस ऐसा है जिसको जो आपको अंदर से एक मोटिवेशन देता है। सपोज आपका एक ड्रीम है कि यू वांट टू स्टडी इन सम स्पेनिश कंट्री इन जर्मनी, तो आप उस लैंग्वेज को दिल से सीखेंगे, अंदर से मोटिवेशन आएगा कि आपको सीखनी ही सीखनी है वो लैंग्वेज। Next, I'll say intelligence, or you can say talent, inborn talent as well. बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको 15-16 लैंग्वेजेस आती हैं और अच्छे से बोल लेते हैं उन सभी लैंग्वेजेस को। That is an inborn talent. हर एक में नहीं होता, all the fingers are not alike. So intelligence is the learner's dimensions to understand commands and to understand what is required of him or her in the learning situation. साइड ट्रैक ना हो जाना, कंसंट्रेशन लूज ना करना, अच्छे से सीखना जो कुछ सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस करना उसको, और सब कुछ समझ जाना, ये भी एक तरीके का टैलेंट है किसी भी न्यू लैंग्वेज को, नॉट ओनली लैंग्वेज, किसी भी नए कॉन्सेप्ट को भी सीखने के लिए। So this is what we could cover in second language acquisition. I personally say foreign language or any second language study actually enhances listening skill, memory, and personality of any person who learns it. One participates more effectively, more efficiently, with
greater amount of responsibility in a multicultural world if one knows any of the other language, any second language. So that is it for this part of the video. You may join the classes to cover all the topics in detail. During our classes, you will get live lectures, discussion with other students as well, and PDFs for each and every topic too. And regularly exams are also conducted. So you can connect it to us clicking the link given in description to get connected for admission. A great best of luck to all of you who are watching this video, not only for academics but for your life's exams as well.